Dear students, how are you all? I hope you all are good. Dear students, bring your EVS book and open lesson number 9 on page number 63. In the previous AV assignment, we already learned about properties of air. Today, I am going to explain you the air pollution and its causes. Air pollution and its causes. Smoke and dust get mixed with air and make it dirty or polluted. Smoke from vehicles, factories, crackers and burning of garbage in the open leads to air pollution. Breathing polluted air can make us sick. So nowadays every individual facing problem causing by air pollution. Air pollution occurs when smoke, dust get into the air and it make dirty. It's very harmful for humans, animals and plants. There are many causes for the air pollution. Sometimes air get polluted due to the wildfires, dust storms, smokes from the factories, power plants, vehicles, chemicals, aeroplanes causes air pollution. When we burn fossil fire, it releases a lot of gases into air, causing air pollution. Now we will discuss the ways to reduce air pollution. We can keep the air clean by following some simple rules. Trees keep the air fresh and clean. We must plant more trees in our surroundings. तो हम एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? अगर हमें अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, प्लांट करने चाहिए. बिकॉज ट्रीज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, दे इंक्रीज ऑक्सीजन एंड गेट राइड ऑफ टॉक्सिन्स. वी शुड वॉक और यूज़ अ व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ व्हीकल्स दैट कॉज पोल्यूशन. तो हमें जब हम कहीं पे कहीं पे जाते हैं तो हमें वॉक करके जाना चाहिए इन द इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स दैट कॉज पोल्यूशन. फैक्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू गिव आउट स्मोक दैट कॉजेस एयर पोल्यूशन. गार्बेज एंड ड्राई लीव्स शुड नेवर बी बर्न्ड इन द ओपन. तो जो भी हमारी गार्बेज होती है या ड्राई लीव्स होते हैं वो हमें ओपन एरिया में बर्न नहीं करने चाहिए. Next is airborne diseases and their preventions. Asthma and dry cough are some diseases caused by air pollution. तो अस्थमा और जो ड्राई कफ होती है वो डिजीज़ जो होती है वो एयर पोल्यूशन की रीज़न से होती है. हमें पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा may need to use inhales and nebulizers. We can protect ourselves from dirty air by wearing mask. तो हम अपने आप को डर्टी एयर से सेव करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? हम मास्क यूज़ कर सकते हैं. We also need to go to a doctor for proper medication. And some diseases such as common cold, tuberculosis and measles are caused by germs present in the air. So they are the some diseases. So that's all about this lesson. Now we will move towards back exercise. Do this work on your book. First is tick the correct answer and the first fill up is dash need air to live, and we have 4 options: humans, animals, plants, all of them. तो लिव करने के लिए एयर की नीड किसको होती है? ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स. तो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? All of them. So write here all of them and also tick here.
Next is, which of these is a property of air? And we have options: color, smell, taste, weight. So, and what's the property of air? Yes, weight. Air has weight. So tick here. Dash on heating. Air dash on heating. And we have options. Which one is the correct option? Expands. Air expands on heating. Which of these causes air pollution? तो एयर पोल्यूशन का कौन सा रीज़न होता है? एंड वी हैव ऑप्शंस: बर्निंग गार्बेज, bursting crackers, smoke from vehicles, and all of these. Yes, all of these, because all three reasons cause the air pollution. So tick here, all of these. Next is, we can control air pollution by. तो हम air pollution को कैसे रोक सकते हैं? We have options: planting more trees, cutting trees, using cars for short distance, burning dry leaves. तो हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? प्लांट्स को ग्रो करके, ट्रीज़ को कट करके, या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम कार्स को यूज़ करके, एंड बर्निंग ड्राई लीव्स. तो हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? येस, प्लांटिंग मोर ट्रीज. सो टिक हियर. Next one is true, false. Polluted air causes asthma. Is it true or false? Yes, true. Polluted air causes asthma. Next is, air does not occupy space. Yes, it's false, because air occupies space, so it's false. Air filled inside a football gives it a shape. येस, जब हम एम्प्टी फुटबॉल में एयर फिल करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाती है. सो इट्स ट्रू. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस एंड वी कैन सी इट. एयर हमारे नियर प्रेजेंट होती है ना, बट एंड वी कैन सी इट? नो, वी कैनॉट सी इट. सो इट्स फॉल्स. बर्निंग ड्राई लीव्स इन द ओपन वर्ल्ड add to air pollution. Yes, it's true. Next is, fill in the blanks. You will do this work on page number 64, and the first blank is, air is dash everywhere, and we have here two options: present, absent. Which one is the correct answer? Present. Air is present everywhere. Next one is, air can change the dash of things. We have options: color, shape. Which is the correct answer? Shape. Air can change the shape of things. Next is, air dash on heating. Yes, air expands on heating. Air has dash. Yes, air has weight. Now do this work on your fair notebook. First topic is, fill in the blanks. Humans, animals and plants need dash to live. Yes, air. Human, animals and plants need air to live. Next is, air is dash everywhere. Air is present everywhere. Polluted air causes dash. Polluted air causes asthma. Next is, we must plant more dash in our surroundings. तो हमें अपनी सराउंडिंग्स में क्या ज़्यादा प्लांट करने चाहिए? ट्रीज़. We must plant more trees in our surroundings. Air filled inside a football gives it a dash. Yes, the correct answer is shape. Air filled inside a football gives it a shape. Next is very short question answers, and the first question is, what is present all around us? Yes, and the answer is air. Air is present all around us. And the next question is, name some diseases
caused by polluted airs? And the answer is asthma, dry cough. Next is how we can control air pollution, and the answer is by planting more trees. Next is long question answers. List any two properties of air, and the answer is air has weight. सेकेंड वन इज़ एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. तो एयर की टू प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि एयर का वेट होता है एंड एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, एंड द आंसर इज़ when smoke and dust get mixed with air is called air pollution. तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब स्मोक्स एंड डस्ट जो होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उससे जो एयर होती है वो पोल्यूटेड होती है. सो आई थिंक ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.